So namaskar all of you. So जो हमारा मेंस रो टेस्ट सीरीज थिला फर्स्ट there were two demo tests. तो फर्स्ट डेमो टेस्ट जोटा थिला तार आज हमें डिटेल डिस्कशन करिबा तार क्वेश्चंस रो. ओके सो जोटा कि हमारा 6th मे रे थिला. So the topic जोटा फर्स्ट डेमो टेस्ट रो थिला that was basically temple architecture of Odisha, various aspects of temple architecture of Odisha. So तारी ऊपर ही हमें आज डिस्कशन करिबा this one. Okay, so एटा गोटे 1 hour क्वेश्चन थिला, 1 hour टेस्ट in which there were 6 questions. Okay, so first let us start then. Discuss the type of temples found in Odisha. It are 250 words, 20 marks of question thila. So before we start, ithare apara janichu ki according to our canonical text jota ki shilpa shastra hisab re au jo canonical text guda amar achi related to temple architecture. Okay, jo thare ki canons or rules guda achi, basic rules guda ki gote temple kemti bana haba. Okay, to sei hisab re ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ओके अकॉर्डिंग टू द कैनोनिकल टेक्स्ट जेमति कि भुवन प्रदीप हला. ओके तो भुवन प्रदीप हरिकारे लिखा हिची कि हमर तीनोटी मेजर टेंपल्स अछि. ओके दैट इज द रेखा देउळ, ओके द पीढ़ा देउळ एंड द खाखरा देउळ. तो बहुत जण भाबन कि ए तीनटा वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर. ओके okay now it is audible. Are you able to hear now? Okay, set a Bluetooth device like it. Anyway, so let us continue. What I was saying was कि ये जो particular okay question रे question देइची discuss the types of temples found in Odisha. हमें जानचु major types जोटा हमरो canonical literature रे अछि. Okay, जोटा कि भुवन प्रदीप हला कि हमरो शिल्प शास्त्र सेला सेथरे तीन प्रकार रो मंदिर कुआइछ. ओके बट आउ भी दीटा टाइप रो मंदिर अछि जोटा ओडिसा रे हमकु मिलुची. सो टोटली 5 टाइप्स ऑफ टेंपल्स यू कैन गेट. आउट ऑफ दिस 3 आर मेजर टाइप्स, 2 आर माइनर टाइप्स. ओके मेजर टाइप्स जोटा कि कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. जदि क्वेश्चन टा टिके हमें बुले की पकेबा कि कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रे केते प्रकार रो टेंपल्स अछि ताहले सेटा प्रिडोमिनेंटली तीन टाइप रो रहइबो जोटा कि भुवन प्रदीप रे दिया हिच. खाली भुवन प्रदीप नो अलगा भी कैनोनिकल टेक्स्ट करि करे दिया हिच. ओके जोटा हला रेखा देउळ, पीढ़ा देउळ, खाकरा देउळ. ठीक अछि बट एठी क्वेश्चन अछि एनी काइंड ऑफ टेंपल फाउंड इन ओडिसा. तो आउ दीटा टाइप रो भी टेंपल्स अछि जोटा कि माइनर टाइप ऑफ टेंपल्स आपण कहि परिबे जोटा कि गौरीय मंदिर ओडा हला आउ हाइपरथल टेंपल्स ओडा हला. Okay, so that we will see. So 5 type of temples you find in Odisha, 3 major and 2 minor. Okay, so भुवन प्रदीप रे ए जो तीनटा टाइप रो आपण को टेंपल देछि. ओके रेखा देउळ, पीढ़ा देउळ, ओके आउ खाकरा देउळ. सो 36 varieties of रेखा देउळ दिया हिच, 5 varieties of भद्र देउळ दिया हिच जोटा कि हमें पीढ़ा देउळ भी कहू, आउ 3 varieties of खाकरा देउळ दिया हिच. राइट, तो भुवन प्रदीप हरिकारे कोन ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया हिच कि जदी पिस्तटा एतिकी हबो, ओके फाउंडेशन टा एतिकी हबो ताले हाइट टा एतिकी हे पर. ठीक अछि. तो दैट इज द रीजन व्हाई हमें एतडे कहउछु कि लिंगराज टेंपल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. तो आपण माने माने भाबुथिबे कि लिंगराज टेंपल रो ओके हाइट अपेक्षा देउळर हाइट रु अधिका हैला जगन्नाथ टेंपल रो हाइट. ठीक अछि. आउ जतले कोणार्क टेंपल रो देउळटा थिला, ओके सैंक्टम टा थिला, तो सेटा ताठु भी आउरी ऊंचा थिला. ओके तो सेही हिसाब रे देखिया गले कि कोणार्क मंदिर रो ओके देउळटा और द सैंक्टम सेंटरम ओके से जो देउळटा सबुठु ऊंचा थिला, तापरे पुरी मंदिर रो, तापरे लिंगराज मंदिर.
बट जो रेशियो प्रोपोर्शन अच्छी ओके जो मेजरमेंट्स केमती कौन हवा कथा ओके परफेक्ट रेशियो तार जहाँ भी दिया है भुवन प्रदीप आउ अलग कैनोनिकल टेक्स्ट रे लिंगराज मंदिरटा तार पूरा पाखापाखि ओके सो एनीवे तो प्रथम तीनटा मेजर टेम्पल्स दैट वी फाइंड इन ओडिशा तो यहाँ 20 मार्क्स रो जेतु क्वेश्चन टा अच्छी और 250 वर्ड्स रो अच्छी ताले गोटे दी लाइन तार कैरेक्टरिस्टिक ऊपर भी आपण लिखिबे ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ द रेखा देउळ ओके सो रेखा देउळ हमर मैक्सिमम टेम्पल्स उडा रेखा टेम्पल्स इन फैक्ट कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देयर इज ए द कांसेप्ट ऑफ कपल ठीक है because the entire temple is thought to be a replica of a man's body ठीक अछि तो गोटे ह्यूमन बॉडी रो रेप्लिका ताको कहै जाउ जेंति कि आपण सैंक्टम सैंक्टोरम को गर्भगृह कहउछन ओके जेंति कि यू नो द गर्भगृह जोटा किंबा जोटा पिला अनबॉर्न पिला जेतले ता मा पेटरे थाए तो सेठी लाइट नाही सो एग्जैक्टली लाइक दैट गर्भगृह रे भी एटा रिलेटिवली डार्कर okay so any part if you see it is somehow related to a okay the human body आउ से हिसाब रे गोटे कलिंगन टेम्पल्स रो गोटे मेजर तार एस्पेक्ट अछि कि जगमोहन आउ देउळ ताको हस्बैंड वाइफ रो पेयर भलिया आपण भाबुछन ओके तो जनरल इट इज कंसीडर्ड कि हस्बैंड कर जो हाइट टा अधिका टिके रहइबो वाइफ को अपेक्षा so the deula which is basically rekha okay in architecture सेटा ऊंचा रहउची ओके आउ जो जगमोहन टा ओके कि ताको आपण मुखशाला कहि परे जेमती नागर स्कूल रे कुआ जाय बट एठी कलिंग स्कूल रे हम ताको जगमोहन कहउछु दैट इज जस्ट लाइक द वाइफ ओके द हाइट टा टिके छोट रहउची आउ सेटा प्राय पीढ़ा देउळ सबले थाए जेमती कि कोणार्क मंदिर आमे जोटा भी देखुछु दैट इज एक्चुअली द जगमोहन ऑफ द ओके टेम्पल जहाँ बड़ी सेटा जगमोहन द एक्चुअल देउळ हैज बीन ब्रोकन ओके सेटा नहीं हो बुझ पाले तो सो रेखा देउळस आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कर्विलिनियर स्पायर्स also known as shikhara or rekha which soar above the sanctum sanctorum that is the garbhagriha of the temple these temples have a square base and a towering spire with a curvilinear outline okay curve होची ना गोटे पॉइंट रे सेटा मीट करू जाई ऊपर okay the exterior walls of these temples are adorned with intricate carvings and sculptures amaro kono kalinga school of architecture re amaro exterior walls uda exterior decoration bahut adhika but interiors re me dekhile amaro adhika decoration nahi plain achi pura okay the most famous rekha dola in Odisha is that of the Lingaraj temple in Bhubaneswar okay kahi ki most famous in that sense ki तार रेशियो प्रोपोर्शन प्राय ऑलमोस्ट आपण कहि परिबे जहा लेखाइची भुवन प्रदीप रे से पाखापाखी ता रेशियो प्रोपोर्शन टा अछि ओके कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रेखा देउळर सो डिस्टिंक्टिव टावर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द देउळ व्हिच ascends into a curvilinear form okay tired vertical divisions called the bhumis on temple's wall okay tired माने आपनकर तार डिफरेंट लेयर्स थिबो ठीक अछि कि डिफरेंट स्ट्राटास थिबो decorative sculptures and motifs adorn the temple's exterior the jagamohan or the assembly hall with pyramidal roof जोटा कि हमें पीड़ा देउळ कहउछु separate from the sanctum okay and amlaka that is large stone disc crowns the temple representing the universe if you see here ओके ए जो पार्ट टा को हमें अम्लाका कहउछु दिस पार्ट ओके तापर आसिला सेकंड मेजर टाइप ऑफ कलिंगन टेम्पल दैट इज द पीढ़ा देउळ सो पीढ़ा देउळ हला इट्स लाइक पिरामिड टाइप रो पीढ़ा भलिया ओके तार जो मस्तक अछि ओके और द अपर पार्ट ऑफ द टेम्पल टा हमें कोन ताकू हमें different parts like I told you human body हिसाब रे ताकू डिवाइड करा हिच ओके तो तार गंडी अछि मस्तक अछि ओके सो मस्तक पार्ट टा तार ओके दैट इज बेसिकली pyramidal and
प्रथमटा सबुठु अधिका बड़ बेस रे थिबो तापरे कमी कमी जिवो लाइक ए पिरामिड. Okay, so Pidha Devula temples are marked by their stepped pyramidal roofs known as pidhas, which consist of multiple horizontal layers that decrease in size as they ascend. These temples are generally smaller in size and primarily used for assembly halls or mandapas, locally known as Jagamohana. The Jagamohana of Sun Temple of Konar is an excellent example of a Pidha Devula temple. जोटा आमे Sun Temple एबे कहूचु सेटा एक्चुअली देवलोटा नो सेटा रेमिनेंट ओके सेटा जगमोहनटा बेसिकली. Okay, actual temple has been destroyed and that was the highest or the loftiest temple in Odisha. ठीक है, तो Lord Jagannath temple को to भी अधिका height तारा थिला. Right, now come to the characteristics of Pidha temples. These are stepped pyramidal roof made up of horizontal layers called pidhas. The sloping eaves projecting from sides supported by carved brackets, square or rectangular floor plan, lavishly decorated with intricate carvings and sculptures. The Jagamohana or the assembly hall is the primary focus as opposed to the sanctum. Kahinkina sanctum ta pray amaro rekha. Okay, so ethi ame jetebale Pidha Devula kochu, generally we are meaning, okay, in most of the Kalingan temples it is the Jagamohana. Right, next, so eita bi out inso apanku mind rakhibar achi the time that you take to write the answer. Okay, so 250 words pai apano max practice करिवे 10 minutes भीतर जेमते आपण लिखिबे आंसर. ओके, तापरे नेक्स्ट हला खाकरा टेंपल. तो एटा टिके रिलेटिवली कम. ओके, सो खाकरा देवला टेंपल्स feature a barrel shaped or cylindrical spire reminiscent of a khakra or a pumpkin. The roof of these temples slope gently upwards and end with an amlaka or जोटा हमें देखिलु. Okay, circular ribbed stone at the top, which is often carried by a kalasha, a pot-like ornament. The best example हमें देखि परिबा Vaitala मंदिर. Okay, the Vaitala temple of Bhubaneswar is iconic example of Khakra Devula style. Characteristic कौन? Barrel vaulted or wagon shaped roof resembling a horse saddle. अपन यदि देखिबे Vaitala मंदिरटा तार ऊपर roof टा okay, that is kind of this kind of a roof. Okay, आउ ता ऊपर आपनकर the kalashas are there, amlakas and kalashas are there. The khakara mundis, that is the semi-cylindrical moldings running along the roof, heavily ornamented with sculptures and intricate carvings, usually smaller in size compared to Rekha and Pidha temples. So এটা বহুত উঁচা হই পারিবনি because of the complexity of its size and mostly dedicated to female deities. Okay, যেমতি কি এठी ଆମେ বৈতଳ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଥିଲୁ ତ ସେଠି mainly ଚାମୁଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ. Okay, Shakti Pitha seta, right? So that is basically jetale Bhauma Kara period re, okay, seta haitla because the Bhauma Karas they supported the Shakta cults. Okay, the Shakti worship hotila. तो Vaitala मंदिर हैला, मोहिनी मंदिर हैला, ए सबु Bhauma Kara period रे, okay, ए मंदिरडा हाइतला. Next, ए तो ए तीनटा हैला आपनकर major temples of Kalinga. Okay, Rekha Devula, Pidha Devula और Khakra Devula. बाकी जो दीटा minor temples अछि, that is the Gauriya temples. Okay, Gauriya temples, these are characterized by semi-cylindrical roofs which resemble the back of a gaur or Indian bison. These temples have shallow curvature and a simple unadorned exterior. बहुत अधिका okay कारू कार्य क्षेत्र है नहीं unadorned okay exterior. तो जिम्ति की हमारा 64 जोगिनी मंदिर होड़ा मध्य प्रदेश रे अछि आ ओडिसा रे हमर दीटा जगह रे अछि बलांगीर रे अछि और भुवनेश्वर पाखे रे अछि. Okay, so 64 yogini temples in Hirapur and Ranipur Jarial are examples of Gauriya Devula temples. Okay, तापर असला the hypaethral temples. Okay, hypaethral temples सुडा एथरे टिके आपनकर foreign influence भी अछि एथरे. Okay, so these are open air shrines with no roofs, allowing for natural light and air to enter. These temples are designed for outdoor worship and have a platform or altar for offerings. Due to their open design, hypaethral temples are less common in Odisha. Some can be found in the ancient city of Puri. So old Puri re kichita temples, hypaethral temples you can get. Okay, so and ethare konna ethare this is the only type of temple jo thare ki amara kichode foreign influence achi. Okay, tapare next, so these are the 5 type of temples
जहाँ हमर क्वेश्चन थिला कि ओडिसा रे केते प्रकार रो टेम्पल्स अछि. Okay, so that you can give these 5 type of temples. But now if I change the question, discuss the important type or discuss the type of temples under Kalinga School of Architecture. Okay, ताहले आमे तीनटा ही लेखिबा. काहे कि ना ए जो गौरीय मंदिर आ हाइपाथेरल टेम्पल्स उडा सेगुडा कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर रे आसु. They are present in Odisha. Okay, but they belong to a separate school of architecture. ठीक अछि. So क्वेश्चन रो डिफरेंस टा बुझबे. एठी जेतु पचारला कि ओडिसा रे केते प्रकार रो मंदिर अछि, तेनु आमे 5 प्रकार रो लेखि. जदि पचारता त कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रे ओके केते प्रकार रो मंदिर अछि ताहले आपण लेखि थांते कि 3 प्रकार रो अछि आ तार कैरेक्टरिस्टिक देतांते डिपेंडिंग ऑन केते मार्क आपण को से दोछि. Okay, so try to finish within 10 minutes. With a neat diagram, second question question do discuss the components of a Kalingan temple. Discuss the features of Kalingan school of temple architecture. Okay, so components to dekhle first to hela devlo. Okay, which is the sanctorum, the main shrine of temple where the presiding deity is installed. It features a curvilinear or pyramidal roof. Okay, को जगह रे curvilinear रोची, को जगह रे pyramidal भी रोची. In Rekha Devula style, the Devula has a curvilinear shikhara, okay, or tower, whereas in Pidha style, it has a steeped or pyramidal roof. Tapar first hela Devula. Second hela Jagamohana, that is the assembly hall. जो प्रथम सब मंदिर ओडा हला सेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि एवोल्यूशन ऑफ कलिंगन टेम्पल्स. तो प्रथम मंदिर ओडा हमर हेतिला जेमति कि रामायण रो जो चारिटा यू नो गॉड्स थिले कि रामेश्वर टेम्पल, ओके, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर एंड शत्रुघ्नेश्वर. तो सेगुडा शैलोद्भव पीरियड रे हेतिला एंड दे वर बेसिकली माने सिंगल चैम्बर टेम्पल्स केवल सेथरे गर्भगृह थिला. ओके, सेथरे जगमोहन नथिला. जगमोहन डेवलप हैला परशुरामेश्वर टेम्पल टाइम टू. ओके, ड्यूरिंग द परशुरामेश्वर टेम्पल सेटा तापरे डेवलप हैला. ओके, सो जगमोहन ए पिलर्ड हॉल इन फ्रंट ऑफ सैंक्टम वेयर डिवोटीज गैदर, जोटा कि मुखशाला ताकू कुआ जाउची कि मंडप कुआ जाउची. ओके, मुखशाला कुआ जाउची नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आमे ताकू लोकली जगमोहन कुआ जाउची. Generally, it has a pyramidal roof in Devula, Rekha Devula temples, while Pidha Devula temple feature a steep pyramidal roof. Tapare asila Nata Mandira. So this was one of the important contributions of the Ganga, Imperial Gangas, ki semane Nata Mandira ta, okay, because dance and music, seta se temple culture sange attach kare. Jemti ki Lingaraj Mandira katha kochu, best example of Kalingan school of architecture. Lingaraj Mandira original जेतले सोमवंशीज माने बनैथिले सेतले नाट्य मंदिर नथिला सेतले. That was later on added, okay, by the Gangas. ठीक अछि. So नाट्य मंदिर or the dancing hall, separate structure in temple complex where dance and music performance take place, usually a flat or low pitched roof. Then the Bhoga Mandapa or the Bhoga Mandir, which is the offering hall, a hall dedicated to offering food and other items to deity, may have a flat or low pitched roof. Okay, so these are the 4 essential components of Kalingan temple. ठीक अछि. तापरे आउरी भी ancillary structures आस्ते आस्ते हैला, because most of the Kalingan temples they follow the Panchayatana ground plan. Okay, Panchayatana माने कि central deity जे थिबे main deity आउ चारिटा deity तांकर पाखापाखि थिबे. ठीक अछि, ताकू Panchayatana style में कहूछु. Panchayatana basically comes from 2 Sanskrit words. Pancha means 5 and Ayata means capturing. So the central deity has captured 4 other deities. The Panchayatana style. Okay. Tapare second part of dita part thila question no main features of Kalingan school of architecture. The first hela the vertical division of the temples. Okay. जोड़ा कि एठी हमें देखु छु. So कहि छु with a exam with a figure, right? तो एठी देखंदु तो फाउंडेशन टा जोटा आपण कहउचंती सेटा हला किबा जहा ऊपरे रहउछ त ग्राउंड को लागि होबनी. ओके, जोटा आकु पिस्त को जाउछ. ठीक अछि. तापरे बाड़ एंड द गंडी एंड द मस्तक. ठीक अछि, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग. ओके, सो बाड़टा दीटा जाकर दैट इज जगमोहन आउ देउलर सेम हुए प्राय.
ओके 12टा तांकर डिफरेंस टा गंडी रु स्टार्ट हुए ठीक अछि सो एई फिगर टा आपन को एठी करिवार अछि So vertical division of the temple. Kalingan temples are divided into 3 vertical sections, that is Bada or the base, Gondi or the body, and Mastaka or the head. Bada comprises 5 horizontal moldings called okay Pabhaga or Pogas bhi taku kaha jaye. Lower Jangha, okay, Bandhana, upper Jangha, and Baranda. Okay. Gondi is the curvilinear or pyramidal structure above the Bada which houses the deity. Mastaka on the top of the temple consists of elements like Beki, Amlaka, and Kalasha. Beki mane jota ki apanakara connecting part, just like a human being ama bekko jemti. So Beki hela it connects your Gondi with the Mastaka. Okay, you can see here. এই যে পার্টটা ওকে অমলাক জস্ট তলে এই পার্টটা এটা গন্ডি হেলা এ পর্যন্ত আর তা উপরটা আপনাদের টোটালি এটা মস্তক ওকে সো দিস পার্ট ইজ দ্য বেকি ওকে সো তারপরে নেক্সট আউ কোন ফিচারস আর আছে एक्सटेंसिव ऑर्नामेंटेशन तो बाहर साइड रे हमरो एक्सटेंसिव ऑर्नामेंटेशन थाए आउ इंटीरियर रे हमरो प्लेन थाए राइट सो Kalingan temples are known for the elaborate carvings and sculptures depicting deities, mythical creatures, floral patterns, and scenes from epics. These intricate designs are visible on pillars, walls, ceilings, and door frames. Okay, jabi ho exterior. Amara, if you see in the Dravidian school of architecture, Dravidian architecture, ताकर बहुत गुड़े जगह कौन ना मंदिर भितर भी बहुत इंट्रिकेट कार्विंग्स अच्छी आमर प्राय सेटा आमर मंदिर भितर गुड़ा प्राय प्लेन ओके सेथरे एते इंट्रिकेट कार्विंग्स नଥାଏ आमर एक्सटीरियर रे बहुत भलो कारुकार्य सब होइता ओके नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ जगमोहन सो एज आई टोल्ड यू जगमोहन कल्चर टा आपनकर परशुरामेश्वर मंदिर रु स्टार्ट होला ठीक अछि ता आगुरु जगमोहन रो कांसेप्ट नथिला केवल गर्भगृह रहउतला. Unlike other temple architectures, the Jagamohana in Kalingan temples plays a significant role, sometimes even overshadowing the Deula. In Pida Deula's Jagamohana is the primary focus with more elaborate design. The variety of temple structures, which we have just question 1 mein dekhilu. Kalingan architecture incorporates various temple styles such as Rekha, Pida, Kakhara, Gauriya, and Hyperthal. Each style showing unique features allowing for diverse range of temples within the Kalingan school. As I told you, Gauriya, okay, Hyperthal को मैं Kalingan school रे actually include करूँ, ठीक है तो, सेटा हमारा भुवन प्रदीप की कोई ये रे, से they are not mentioned as sub types of temples, okay, भुवन प्रदीप रे मात्र 3टी types और तारो सब sub types अच्छी, okay, जोड़ा मैं first question में देखी थी कि एतिकिटा सब टाइप अछि रेखा देउलर एतिकिटा सब टाइप अछि खाखरा देउलर एतिकिटा सब टाइप अछि ओके पीड़ा देउलर और भद्र देउलर राइट नेक्स्ट अडैप्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन सो एटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिबा कि कालक्रमे ओके हमरो कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर केमिति चेंज हे केमिति इवॉल्व कला सो कलिंगन आर्किटेक्चर डेमोन्स्ट्रेट्स हाई डिग्री ऑफ अडैप्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स elements from other temple architectures as well as Islamic features have been seamlessly incorporated in Kalingan style. So this is also something कहीं ना जोड़ा कि later times रे, okay, later times रे 13th, 14th, 15th, 16th century, okay, सही time रे जो सब ये रे, सेठी हमें देखिबा केबे को जगह रे Islamic features भी किछटा अछि. May not be in our major temples, but in other temples, okay, within Odisha, एटा हमें देखिजु. Then focus on sanctity of space. So Kalingan temples are designed to create a sacred space for worship with specific attention to placement of structures within the temple complex. जेमति मैं कहली गोटे हला पंचायतन स्टाइल रे आपनकर सेंट्रल डीटी रहउछन्ती ताका चारि पटे चारटा डीटी रहउछन्ती ओके पार्श्व देवता जो माने ओके सब्सिडियरी डीटीज जो माने से माने रहउछन्ती. The layout of the temple complex is intended to guide devotees through a spiritual journey leading them to the sanctum sanctorum. सेतपई जोटा आगु को जाई कि हमें देखुछु प्रदक्षिण पथ ओके तो इन मेनी टाइप्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर्स लाइक वेसर रे हला कि किछिडा द्रविड रे भी तांकर कोन ना प्रदक्षिण पथ ओके प्रदक्षिण पथ माने आपण जनरली आपण जो देखिबे पेरेंट्स माने कि जदि आपण बड़ मानन को देखिबे से जते मंदिर जिबे से सीधा पसि जानतिनी गर्भगृह
ସେମାନେ okay, depending on whether it is a Vaishnavite temple or a Shivite temple or a Shakti temple, तारो different rules अछि. Vaishnavite temples रे complete circle निया हुए तारो पुनी rules अछि केतेटा complete circle आपन नबार अछि. Shivite temples रे केबे भी full circle जानती अधा जाइकी पुनी आपन return करिवे बुझि परले तो सेई जो बाटडा जाउचंती ताको इंग्लिश रे ambulatory passageway कुआ जाय किंबा प्रदक्षिण पथ ताको हमें कहउछु. Okay, so through that, through गोटे circuit type रो, it may be a continuous circuit or a half circuit अपना से हिसाब रे जाइकी तापरे जाउचंती sanctum sanctorum गर्भगृह को तापरे जाउचंती. Then stone carving techniques. Kalingan temple architecture showcases exceptional stone carving techniques. Expert artisans created detailed sculptures and reliefs on sandstone, laterite and chlorite, bringing temple walls to life. Okay, तो ये जो detailed हमारा model answer टा already अपन को okay से folder रे अच्छी app रो अपन जो model answer जो तो से थ्रू अपन तको access करी परिवे. Okay, next integration of art and dance जोड़े कि हमारा नाट्य मंदिर रो concept टा. Kalingan temples often feature a natya mandira which highlights the importance of art and dance in the religious and cultural life of the region. The natya mandira serves as venue for classical Odissi dance and other performing arts, which is basically the Ganga dynasty semane eta anchoni bi तांको आगुरु भी जो मंदिर उड़ा हितला जेम तुम एग्जांपल देली लिंगराज मंदिर रे यार लिंगराज मंदिर रे ओरिजिनली नथिला नाटा मंदिर बट ओके ताको बोधे आई थिंक मोर एग्जैक्टली मन पड़नी आई थिंक अनंग भीमा देवा ओके से ताको ऐड कले परे राइट. सो नाटा मंदिर सर्व्स एज वेन्यू फॉर क्लासिकल ओडिसी डांस एंड अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स. तापरे टेंपल्स हैज cultural and educational centers. So Kalingan temples have historically been centers for not just religious activities but also cultural and educational pursuits. Many temples hosted scholars, poets and artists promoting the development of literary art and philosophy. Okay, next construction techniques. So Kalingan temples were built using dry masonry technique wherein precisely cut stones were laid without using mortar. The stones were interlocked using male and female joint system, ensuring stability and durability of the structures. Then sacred geometry and vastu shastra. तो अपन देखिए first ray of the sun एमिति सेटा हेतिबो कि first ray of the sun generally गर्भगृह भितर पसिबो. Okay, Kalingan temple architecture follow the principle of sacred geometry and vastu shastra, the ancient Indian science of architecture. The temples are designed to harmonize with the natural environment and cosmic energy, enhancing the spiritual experience of the devotees. Last point, iconography and symbolism. So Kalingan temples often feature a rich and diverse range of iconography, including various forms of deities, mythical creatures, and scenes from Hindu mythology. Not only Hindu mythology, even if you see in Lord Jagannath temple, okay, seti Buddhism ro bhi okay related kichita jinso apno mil jauchi. The iconography and symbolism employed in temple carvings were meant to convey deeper spiritual and philosophical meanings to devotees. Overall, the Kalingan school of temple architecture displays a unique blend of artistic, architectural and spiritual element that makes it stand out among other temple styles in India. The combination of diverse temple styles, extensive ornamentation and integration of art and dance contribute to the distinctiveness of Kalingan temples. Okay, आउरी भी बहुत characteristic अच्छी जोटा इटी देनी, of course 20 marks में अपना 8 हो अधिका लिखी भी परिवेन. जेमती की Kalingan School of Architecture normally हमें गोटे जिनसे देखिबा ओके जेमती मेघनाथ प्राचीर अछि ठीक अछि. सो दैट इज अ बाउंड्री जोटा कि हमें नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जनरली देखुना ठीक अछि गोटे वेल डिफाइंड बाउंड्री. आउ गोटे हला नागर स्कूल रो बहुत गुडे सब स्कूल्स रे तांकर सोर्स ऑफ द वाटर ठीक अछि सेटा टेंपल भीतर थाए. स्टेप टैंक हे पारे कि जहां भी हे पारे सेटा टेंपल भीतर थाए. Okay, but Kalingan School of Architecture रे अपन प्राय जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज आउटसाइड द ओके मेन प्रीमाइस मेन टेंपल प्रीमाइस रो बाहर थाए. एमती आउरी बहुत गुडे तार कैरेक्टरिस्टिक अछि बट देन एटा 20 मार्क क्वेश्चन पे भी एतिकी लिखि पारिबानी हम ओके टाइम होबनी हम राइट. सो से देइची क्वेश्चन रे कि अपन गोटे डायग्राम करिवे इवन देखिबे जो क्वेश्चन रे डायग्राम दरकार पड़िबो ओके सब क्वेश्चन रे डायग्राम करा दरकार नहीं बट जोटी की रिक्वायरमेंट अछि जेमति एठी ओटे हमरो इलस्ट्रेशन दबार अछि तो एठी हमें डायग्राम टा करिवे ओके. आउ डायग्राम टा सबले एनोटेट करिवे लिखि देबे एठी फिगर ट्रेडिशनल कलिंगन टेंपल. Okay, now come to question 3.
Discuss the stages of evolution of Kalingan temples. So this is very, very important. The stages of evolution of Kalingan temples. 3 stages: early, middle and late. Okay, how the characteristic design kona. Early Kalingan temple जोड़ा कि 7 to 10 centuries जोड़ा मैं कहली जोड़ा शैलवंश period रो start हैला. Okay, सेत्ते बड़े कौन ना प्रथम मंदिर जोड़ा जोड़ा कि हमें first Bhubaneswar group of temples कहूँ. Okay, which is basically this Rameshwara, Lakshmaneshwara, Bharateshwara, Shatrughaneshwara temple. এটা ওল্ড ভুবনেশ্বরে ଆପଣ পাইবে. ওকে, জস্ট ওভারব্রিজ রু তଳକୁ গলে বাম পଟେ প্রথমে যেটা পড়ছি সেটা রামেশ্বর টেম্পল, তারপরে টিকে আকু গলে সে তিনটা টেম্পলস আপনাଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ. and they are basically especially ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଭରତେଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର টেম্পল ଗୁଡା ସେଗୁଡା ହେଲା unicameral temples, means they don't have they don't have jagamohan, only garbhagriha is there. Okay, characteristic କଣ? first early Kalingan stage ro 7 to 10 century. Simple and austere temple design. Initial development of Rekha Deola and Pida Deola style jota Ganga mane agugu nele. Okay, limited ornamentation and sculptures predominantly built with sandstone. Okay, and smaller temple structures. Example, Parshurameshwara temple, Bhubaneswara 7th century, and it is euthu start hela apanakara kono the Jagamohanara concept. Although aro Jagamohanata Pida nuho, it's a flat type of Jagamohan. Okay, one of the oldest surviving temples in Odisha. It marks the beginning of Kalingan temple architecture. Okay, now एटा कौन ना एटा जो मुक्तेश्वर भी जो देजी example ये गोटे premise रे अछि. Okay, परशुरामेश्वर तापरे गवर्नमेंट सेठी पार्क बनी छि आपण सेठु जाईकी you can go to Mukteshwara temple. Okay, मुक्तेश्वर पाखरे सेही temple complex रे सिद्धेश्वर temple टा भी अछि. Okay, so Parshurameshwar and Mukteshwara eta tara example. This is 10th century. Known for its exquisite carving, the temple showcases the early stage of Kalingan architecture with hint of evolving style. The medieval Kalingan stage, tara characteristic the more elaborate temple design. So it is 11th or 12th century. Refinement and maturation of Rekha Deola and Pida Deola styles, increased ornamentation and sculptures, used of both sandstone and laterite, larger and more complex temple structures. जोटा कि लिंगराज टेम्पल और राजारानी टेम्पल. ओके, तारा एग्जांपल्स अपन दे परिबे. Then the late Kalingan stage, that is 13th to 16th centuries. So highly ornate and sophisticated temple designs, development of Khakra Deola style. Okay, use of maximum sculptures and integrate carvings, use of chlorite and laterite for more durable structures, mega temple complexes and structures. माने एठी कोन उठला ना कि आपनकर multiple temples were there in a temple complex. तार बेस्ट एग्जांपल हला जगन्नाथ टेम्पल आउ जोटा कि हमें सबटु पीक रे कहि परिबा. ओके, दैट इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, राइट. So these stages of evolution, they reflect the progress and development of Kalingan school of temple architecture over time. From the initial simplicity, जोटी कि हमें देखिलु unicameral temples जोड़ा आपनकर थिला, of the early stage, Kalingan temples evolved in increasingly ornate and sophisticated structures, culminating in grand and intricate designs of late stage. Okay, now come to question 4. Discuss the contribution of Bhaumakaras and Somavamsis to the temple architecture of Odisha. Okay, so Bhaumakaras around 8 to 10th century और Somavamsis तांको परे 10 to 12th centuries. Okay, जोड़ा हमें देखतिलु कोन ताकर सोशियो कल्चरल contribution कौन थिला ना. Bhaumakaras, who were basically Mahayana Buddhists by religion, although they were very tolerant और से सबु religion को promote करूथिले. Okay, तांको बेले वज्रयान बुद्धिज्म भी आपनकर स्टार्ट हेतिला एडी ओडिसा रे. Okay, तापरे तांको पर so they were although they were Buddhists, by the time they came तांको आगुरु एठी social order टा एते well defined नथिला. आगुरु जहा वैदिक वर्ण व्यवस्था थिला, बट तापरे ओडिसा रे से जो वैदिक रूल टा नथिला. ठीक अछि, माने जाको हमें कहि पारे ब्राह्मणिकल रिलीजन रो रूल नथिला. एठी मेजर रिलीजन वाज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो सोशल ऑर्डर टा सेते बळे नथिला. तो एमाने आसिले, although they were themselves Mahayana Buddhists, एमाने कोन कले they brought back the Vedic order. ओके, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थिला भौमकर माने पुणी औथर तको आनले. और तांको पर सोमवंशीस who were basically mainly Shivites, अवश्य तांकर भितरु के जण वैष्णवाइट्स भी थिले, से माने ताकू आउरी आगो लेवल को नै गले.
जहाँ को आम कहूँ सांस्कृतिक ब्राह्मणाइजेशन ऑफ ओडिशा से माने स्टार्ट कले केमिति ना नॉर्थ रु आनिकी प्रीस्ट मानकु ओके हिंदू प्रीस्ट मानकु एठी तांकु लैंड देले विलेज देले जहाँ को आम शासन बोली कहूँ ठीक अच्छे तो से शासन गरिका तांकु दिया है कि तो से माने तांकु एठी सेटल करेले એટલે ગંગો माने आसिले दे टुक इट फॉरवर्ड ओके तो एटा तांकर कंट्रीब्यूशन ऑफ भौमकरज एंड सोमवंशीज सोशल और पॉलिटिकल एरिया सेटा रिलीजियस आउट टेंपल आर्किटेक्चर कोन तांकर थिला सम ऑफ द बेस्ट टेंपल्स हैव बीन बिल्ट बाय देम ओके सो लेट अस सी दैट द भौमकर एंड सोमवंशीज डायनास्टीज प्लेड a significant role in development and patronage of temple architecture in Odisha. These dynasties commissioned and supported the construction of numerous temples, contributing to evolution of Kalingan temple architecture. So, introduction to Rekha Deula and Pidha Deula styles, जोड़ा की basic style टा A to start है इतना. तो भौमकरस were instrumental in early development of Rekha Deula and Pidha Deula, जोड़ा की गंगा माने ताकु पूरा तारा pinnacle की तारा climax को नहीं गले, which later became distinctive feature of Odishan temple architecture. Focus on Shivism and Shaktism, Bhaumakaram. The Bhaumakaras primarily patronized Shivism, leading to the construction of numerous Shiva temples like Shishireshwara, Markandeshwara and Taleshwara temples in Bhubaneswar and Shakti temples like the Vaitala temple in Bhubaneswar. Mohini Mandira bhi achi. Okay. Development of early Kalingan stage. The reign of Bhaumakaras marked the early Kalingan stage of temple architecture, characterized by simple and austere designs with limited ornamentation. Example, the best example is the Shivite temples, but the Vaitala temple of Bhubaneswar. Temple features a Khakara Deola style roof and is dedicated to goddess Chamunda, showcasing the diversity of temple styles under the Bhaumas. Okay. Next, Somavamsis. Dita kahitila Bhaumankara contribution kon Somavamsis kara contribution. So contribution of Somavamsis, refinement of Kalingan temple styles. Okay, so Somavamsis were mainly Shivites. प्राय समस्ते शिवाइट्स थिले वैष्णवाइट्स भी थिले बट एज यू नो दे वर क्वाइट टॉलरेंट ओके जेते हमें देखिछु डायनेस्टीज जोटा हमर सिलेबस रे भी अछि डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा सेतरे वी डोंट फाइंड एनी डायनेस्टी ओके जे की दोज ऑफ यू नो दोज हु वर नॉट टॉलरेंट ऑफ अदर्स इनफैक्ट भौमकर तो बहुत ही टॉलरेंट थिले से माने निजे बुद्धिस्ट थिले किंतु से माने बहुत बाकी रिलीजन सुडा वैष्णविज्म शिविज्म काइना सेतबळे हिंदुइज्म रो कांसेप्ट नथिला So Vaishnavites, Shivites, Shaktites, okay, जो Shaktism से सब अलग थिला. तो ये समस्त को प्रमोट करते हैं, right? Patronage of various religious sects, the Somavamsis further developed and refined the Rekha Deola and Pida Deola styles, resulting in more elaborate temple designs and increased ornamentation. Patronage of various religious sects, the Somavamsis were okay more ecumenical in their religious patronage, supporting the construction of temples dedicated to different deities and sects like Vaishnavism, Shivism and Shaktism, although they themselves were Shivites. Okay. Development of Middle Kalingan stage. The reign of Somavamsis marked the Middle Kalingan stage of temple architecture, characterized by more complex temple structures, larger temple complexes and greater use of sculptures and carvings. Then cultural development. The Somavamsis actively promoted art, literature, culture, which led to flourishing of temple architecture and integration of various artistic elements in temple design. So example हमें दीटा दे परिवा बहुत गुड़ा example दे होगा सोमवंशीज को बेले बहुत भला भला temple सब हुई जी लिंगराज हला राजारानी हला मुक्तेश्वर हला ये सब तांको period रही जी. Okay, so Lingaraj temple, since that is the best example of Kalingan school of architecture, constructed under the patronage of Somavamsis. Okay, this temple is the prime example of mature Rekha Deola style and shows the architectural progress of the time. ଆଉ ସେଟା mainly କଣ ନା ତା ratio proportion absolutely ଯାହା theory ରେ ଦିଆ ହେଇଛି almost is matches that. Okay, so although Lord Jagannath temple at Puri जोटा कि later Imperial Gangas मैंने ताको बनेले, okay, Imperial Gangas मैंने जो current देवलोटा सेटा बनेइछन्ति. ठीक अछि तो that is a different story altogether जोटा हमें if we get a question of that we can study. Okay, जो current आपण देखुछन्ति देवलोटा, that is the Sanctum Sanctorum of Lord Jagannath temple, seita okay, that was made by your the Gangas. ठीक अछि तो Imperial Gangas जोड़ा सेटा बनेइछन्ति किंतु सेही कॉम्प्लेक्स रे ता आगुरु जेमति आदि नरसिंहराम टेम्पल अछि. ओके, टेम्पल कॉम्प्लेक्स भीतर आदि नरसिंहराम टेम्पल ता आगुरु हिच. ओके, करंट टेम्पल आगुरु हिच सेटा.
अलग डायनेस्टी बनै आ ता परे भी अलग डायनेस्टीज माने सेथरे ऐड करिसेंती भोईज हेले एंड अदर्स ओके दे हैव आल्सो एडेड राइट सो लिंगराज टेंपल को एथि पई आम एग्जांपल नौचु काना रेशियो और प्रोपोर्शन हिसाब रे मेजरमेंट हिसाब रे जहा थ्योरी रे लिखाई छि भुवन प्रदीप रे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम ओके लेंथ ब्रेड्थ प्रोपोर्शन से माने यूज करिसेंती सेट ओके देन द राजारानी टेंपल दिस टेंपल built during the Somavamsi period displays the sophistication of middle Kalingan stage with its intricate carvings and unique architectural features okay राजारानी टेंपल कोन तर सबुठु काई के दी यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर लिखला राजारानी टेंपल रे गोटे एमिति फीचर अछि जोटा कि हमें कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रे पाउ जोटा कि हमें प्राय नॉर्थ इंडिया रे पाउछु सेटा हला अंग शिखर ओके अंग शिखर स्टाइल टा हमें एठी पाउनु अंग शिखर कोन ना एक्चुअल टेंपल रो देउल रो माइनेचर कॉपीज जेंदा हमें कहि पारे जेरॉक्स कॉपीज है कि से पूरा ओके जो देउल ऊपर पूरा लागि थिबो सेटा ओके एटा प्राय हमें अलगा कलिंगन टेंपल से पाइबनु बट राजारानी टेंपल रे एटा अछि ओके इवन मुक्तेश्वर वाज built during their time okay in summary the Bhaumakaras and Somavamsis dynasties significantly contributed to evolution and development of Kalingan temple architecture. Their patronage and support for temple construction resulted in creation of numerous architectural marvels that continue to represent the rich cultural heritage of Odisha. Okay, so this is question number 4. Now come to question number 5. Discuss the temple architecture of Mukteshwara temple. Okay, so eta bhi gote Somavamsi period re hitira. The Mukteshwara temple located in Bhubaneswar, Odisha is an important example of Kalingan school of architecture, often referred to as gem of Odishan architecture. It is known for its intricate carvings and unique features. The temple dates back to 10th century and is dedicated to Lord Shiva. So the architecture, first it is a Rekha Deula style. Temple shows Rekha Deula style with its curvilinear shikhara, okay, and vertical division, that is Bada, Gondi and Mastaka. So it auri details re lekhyar mane scope nahi jemti ki ame okay बाड़ कथा कहूँ ठीक अच्छे तो आप देखिए मंदिर एनी टेंपल यू गो कलिंगन टेंपल आप देखिए जो बाड़टा तार सब डिविजन्स ओके को को टेंपल रे पुराना टेंपल से त्रिअंग बाड़ मींस देयर विल बी 3 डिविजन्स ऑफ दैट तापर आसला पंच अंग बाड़ पांचटा डिविजन थिबो ठीक अछि सो लॉट ऑफ डिटेल्स आर देयर बट फॉर जीएस इट इज नॉट रिक्वायर्ड जी नौचंती ऑप्शनल मे बी गोटे दुटा क्वेश्चन पे आपन दरकार हो बट एज एन ऑब्जर्वर जितना हम मंदिर जाउछु बुलिया पई आपण एई जिंसोडा माइंड रे रखबी ताको देखिले यू रियली एंजॉय एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड कि एते यू नो स्किल्ड काम ओके एते आगुरु केमती होतला नेक्स्ट इज द तोरण ठीक अछि ए तोरण कांसेप्ट ता बेसिकली हमें जेतु मु कहली कि ए जो टेंपल गुडा कंस्ट्रक्ट हेतिला ता बहुत आगुरु एठी मेनली बुद्धिज्म और जैनिज्म दैट वाज द मेन रिलीजन इन ओडिशा ठीक अछि not Brahminism ठीक अछि वैदिक रिलीजन ता मेन रिलीजन नथिला एटा मच लेटर ए सोमवंशीस ओके आ ता परे गंगज आसिला परे सेटा आस्ते आस्ते बिल्ड हला ओके तो ता आगुरु थिला बट मझिरे जैनस आ जैनिज्म और बुद्धिज्म सेटा फ्लरिश कला भौमकरस से माने यानी कि फुनी चतुर्वर्ण व्यवस्थाटा आस्ते आस्ते फुनी एस्टैब्लिश करले ऑल्दो दे वर देमसेल्व्स ओके बुद्धिस्ट महायान बुद्धिस्ट थिले से माने एंड आफ्टर देम द सोमवंशीस okay and the Gangas se mane pura tako Sanskritic Brahminization eti kale right one of the most distinctive features of Mukteshwara temple is the ornate arch gateway that is torana jota ki amaro major temples guda jo achi amaro torana ro concept nahi okay gote attractive gateway ro concept nahi jota ki achi amaro koti Dravidian temples se South Indian temples se taku se mane gopuram kohant but if you remember कि स्तूपस अपन जदि स्तूप देखिबे स्तूप इज बेसिकली बुद्धिस्ट कांसेप्ट ओके सॉरी वैदिक कांसेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिज्म ओके बहुत जण होंती एटा गोटे बुद्धिस्ट कांसेप्ट स्तूपटा नो एटा वैदिक कांसेप्ट एक्चुअली बट पॉपुलराइज्ड बाय द बुद्धिस्ट ठीक अछि तो सब स्तूप रे देखिबे तोरण उडा थिला चारिटा डायरेक्शन रे चारटा तोरण थिबो गेटवे ठीक अछि हमें जोडा तोरण कहउछु सेटा in South Indian architecture, temple architecture, taku gopuram kuha jauchi. So having beautiful toranas in the Hindu temples, seta amaro it's not a feature of Kalingan school of architecture. Amara pray konosi mandir re seta dekhibe nahi. Okay.
So one of the distinctive features of the Mukteshwar temple is the ornate arch gateway, that is Torana, that leads to temple complex. This feature is unique among Kalingan temples and showcases strong influence from Buddhist and Jaina architecture, from the stupas mainly. Okay, tapare asila Jagamohana. The Mukteshwar temple features a Jagamohana or assembly hall with a pyramidal roof, which is typical of Rekhadeola temples. Tapare elaborate carvings. तो एथि सब गज सिंह ओके आपण देखिबे से जो तोरण रे ओके तार जो दीटा पिलर्स अछि से पिलर्स जस्ट ऊपर जोठी डेकोरेटिव आपनकर येटा थाए सेठी आपण गज ओके मुख देखिबे मींस बेसिकली दैट इज कोन two crocodiles type ro आपन को मिलिबो and lot of other animals are also there. Okay, so lot of different animals, flower patterns you will find there. Temple is adorned with intricate carvings including depictions of various deities, floral patterns and scenes from Hindu mythology. Some of the most famous carvings include the dancing Ganesha and the Lasanata. Okay, that is the dancing Shiva and Parvati. Then ornate doorway जोटा मैं कहलु तारा जो तोरणटा. Okay, in fact आपण जदी देखिबे if you Google Mukteshwar temple से temple टा आपण को basically आसीबोनी search रे but तोरणटा आसीबो. Okay, Mukteshwar has become synonymous with its beautiful gateway of its beautiful torana. Okay, the entrance to Sanctum Sanctorum is highly decorated with carvings of various deities, mythological figures and floral motifs. The door jumps are adorned with images of the Navagrahas and the Digopalas. Okay, that is the guardians of the direction, and the Ganga and Yamuna rivers. Then sculptures dekhiba. The temple features numerous sculptures of deities and mythical creatures, including the Nataraja, that is dancing Shiva, the lion-headed, okay, Gargyol, the Naga and Nagini, the snake couple on the temple walls. Then there are also erotic sculptures. In addition to religious iconography, the temple also features erotic sculptures depicting amorous couples, which is common feature in many Indian temples. Okay, so it is stone carving technique jodi dekhiba. It demonstrates the advanced stone carving techniques of Kalingan artisans with its delicate and precise carvings on sandstone. Then blend of architectural styles. The temple represents a transitional phase in Kalingan architecture, blending the simplicity of early Kalingan stage with the more elaborate design and ornamentation of middle Kalingan stage. Okay, and also it is a part of a temple complex. It pura gote complex ro part eta. Ta pakha pakhi Siddheshwara temple is there. Au tikke durare but seiti bata achi chaliki apan jai peribe, that is the Parshurameshwara temple. Okay, the Mukteshwar temple is a part of larger temple complex that also includes Siddheshwara temple, a small shrine dedicated to Lord Shiva, and also it has the Parshurameshwara temple. Okay, so the Mukteshwara temple is a testament to skills and craftsmanship of Kalingan artisans and architects. Its unique features such as Torana and the blend of architectural styles make it an important, okay, example of evolution of Kalingan temple architecture. Au jodi apanko samay milala tale Mukteshwara dance festival upare bhi gote line lekhi de paribe. Okay, now let us go to last question, question 6. Which of the write a short note on architecture of the Vaitala temple. Okay, so Vaitala temple ta Khakra temple ta, it is basically बहुत ही कम से type रो temples आपन को मिलिबो. Okay, so the Vaitala Deula also known as the Tinimundia. काहे कि Tinimundia ना तारो जदि देखिबे मस्तक रे सेठी तीनिटा अमलाक, okay, और तीनिटा कलश अछि. Okay, it is known as the Tinimundia or the Vaitala temple. It's a 8th century temple located in Bhubaneswar, Odisha, dedicated to goddess Chamunda, the form of, okay, goddess Durga. The temple is an important example of Kalingan temple architecture, particularly Khakra Deula style. Okay, temple architecture of Vaitala Deula. So first it is the Khakra Deula style. The Vaitala Deula is a prime example of Khakra Deula style, characterized by its steep pyramidal roof instead of curvilinear shikhara found in the Rekha Deula. So maximum amara Kalingan temples Rekha Deula. Then the sanctum, that is the Garbhagriha. The Sanctum Sanctorum houses the central deity Chamunda and features a low dark chamber, okay, with flat roof. Jehetu eta tantric, okay, kimba shaktism sange related,
तो एठी बहुत एसोटेरिक प्रैक्टिसेस गरिका होउतिला आगु ठीक अछि तो एटा शक्ति पीठटा then the jagamohana that is the assembly hall the Vaitala Deola has a jagamohana or assembly hall with a pyramidal roof in line with Khakra Deola style. The roof consists of several horizontal layers that gradually decrease in size, creating a stepped appearance. Okay, that is the jagamohana. Next, the carvings and sculptures. The temples are adorned with intricate carvings and sculptures, including images of Chamunda, Shiva, Parvati, Ganesha, and other idols. There are also various mythical creatures and scenes from Hindu mythology depicted on the walls. Then also there are erotic sculptures. Okay, like many Kalingan temples, the Vaitala Deola features erotic sculptures portraying amorous couples, showcasing the various aspects of human life and emotion. In the Khakra influence, the Vaitala Deola's Pida Deola style showcases some influence from Khakra Deola style, with its elongated and curving roof resembling a Khakra, okay, or a type of pumpkin. Then iconography and symbolism. The temple's iconography is predominantly focused on the theme of death and destruction, with images of Chamunda, a fierce form of goddess Durga, as well as other wrathful deities and fierce mythical creatures. ठीक अछि तो एटा कोन जेहेतु एटा शक्ति पीठटा तो एठी it is basically tantric practices एठी बहुत अधिका अछि. Stone carving techniques. Vaitala Deola exhibits the skilled stone carving techniques of Kalingan artisans, featuring delicate and detailed carving of sandstone. Then architectural transitions. कौन सब आस्ते आस्ते change ହେଲା एतरे. Vaitala Deola presents a transitional period in Kalingan temple architecture, showing the evolving Pida Deola style and blending elements from other styles like Khakra Deola. Then sacred tank. The temple is situated near a sacred tank, that is Bindusagara, which is considered to be source of spiritual energy and associated with many legends and myths, and also serves as a source to many other temples in that area. ठीक अछि से जगह रे अपन जदि देखिबे many temples were built by the Somavamsis, okay, and some of the temples, most of the temples there are Shivite temples, okay, Lingaraj temple है आउ भी जितने अपन temples से देखिबे आउ किछिटा temples अछि जोड़ा कि Vaishnavite temples, okay. Some temples are there within it, okay, which are Vaishnavite temples also, right? The Vaitala Deola is an important example of Pida Deola style in Kalingan temple architecture, showing unique features and intricate carvings that reflect the craftsmanship and artistry of its period. Its blend of architectural styles and rich iconography contribute to its significance as a landmark of Odishan heritage. Got it? So these are the Khakra Deola. Good. Important example of this is Pida Deola. Actually कौन तारो जो जगमोहनटा सेटा पीढ़ा स्टाइल रही आमर प्राय जिते टेम्पल्स अच्छी सबूर जगमोहनटा पीढ़ा स्टाइल रही ठीक है तो सो दैट इज व्हाई इट हैज रिटन इट इन दैट वे बट मेनली तारो जदि आप देउलटा को देखिबे सैंक्टमटा को देखिबे दैट इज ओके बेसिकली द खाखरा स्टाइल आमे गोटे टेम्पल रो तार जो देउलटा अच्छी से देउल को सही देउल हिसाब रे मींस सैंक्टम सैंक्टरम ओके किंबा हमें ताकू विमान कहि परिबा शिखर कहि परिबा ठीक अछि ता हिसाब रे हमें टेम्पल टाकू क्लासिफाई करू बुझ पारे तो एटा हला दिस इज ए खाखरा टेम्पल बिकॉज़ इट्स ओके शिखर और सैंक्टम ऊपर सुपर स्ट्रक्चर टा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए ओके वॉल्टेड रूफ राइट गोटे वैगन वॉल्टेड रूफ टाइप रो तारा हिच ए टाइप रो तारा इफ यू सी दैट ओके तार ऊपर पोर्शन टा ए टाइप रो एठी अमलाक तीनटा थिबो ओके कलश थिबो दैट इज तार ऊपर स्ट्रक्चर टा ए टाइप रो सो दैट इज व्हाई इट इज ए खाखरा टेम्पल बट तार जो जगमोहन को देखिबे जस्ट लाइक जगन्नाथ टेम्पल और एनी अदर मेजर टेम्पल ऑफ ओडिशा तार जगमोहन टा हला ओके दैट इज बेसिकली योर राइट दैट इज ऑफ पीड़ा देउल टाइप okay but it is an example of Khakra temple बुझिपाले fine so next काली रो जो next जोटा open test टा
सेटा थिला डायनास्टिक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा उपरे सो वी विल डिस्कस दैट टुमारो ओके एटा आपण मॉडल आंसर फोल्डर रे गले यू कैन get the PDF okay so we'll stop here then